बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is video number 5 and the week number is also 5. In last video we completed our lesson number 2, 3 and 4 of unit number 2. Today we are starting lesson number 5 of this unit. So first we make the title page of unit number 2, number pattern, and the lesson number 5 is pattern and relationship. Look at your question number 1, page number 22. In question number 1, you have to use counter and stick to make of shapes. Question 1, make these pattern with counters and stick. You have to use counter and stick to make the pattern. Continue them for another 2 rows. आपको इसको continue करना है, 2 rows और complete करनी है इसकी. Draw the pattern, pattern draw भी करिए and complete the table of result of each pattern. और हर एक का result भी क्या करना है आपको complete करना है. Look at question number 1 is this. You have to draw pattern for 2 rows and complete the result. Look at the board. Question number 1 on page number 22. Look at part A. In this pattern, it is used only one counter. This ball is called the counter. ठीक है, ये balls counter है. Only one counter and the sticks and 3 sticks, 1, 2 and 3. Okay. और आगे आपको इसके लेफ्ट राइट हैंड पर आपको एक रिजल्ट नजर आ रहा है. यहाँ आपने काउंटर्स और स्टिक की क्वांटिटी लिखनी है जो पैटर्न में यूज हुई है. Counters and this is sticks. In this pattern there is one counter, so we write here 1. Now count the sticks. This is 1, 2 and 3, so we write here 3. Okay. Look at another pattern. In this pattern they use 2 counter, 1 and 2, and the sticks are 1 and 2. There are 2 counters, so we write here 2 and count the sticks 1, 2, 3, 4 and 5. Write here 5. Look at the third pattern. In this pattern they use 3 counters, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. There are 3 counters. Now count the sticks 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 sticks. Okay. These patterns are drawn in your book. Now continue them for another 2 rows. आपको इसको 2 और मजीद पैटर्न ड्रॉ करने हैं. In this pattern इसमें कितने काउंटर यूज हुए? 1, नेक्स्ट में 2, थर्ड वन में 1, 2 and 3. Now we use 4 counters for make the pattern.
1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. So we write here 4. Count the sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Write here 9. Now make another pattern. Now we use 5 counters. Okay. 1, 2, 3, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 counters, and now count the sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So we write here 11. Okay, this pattern is completed. Look at the counter 1, 2, 3, 4 and 5. This is the counting. Now look at this 3, 5, 7, 9 and 11. मीन्स हर नेक्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 ऐड हो रहे हैं. मीन्स 2 में प्लस कर लीजिए 2, इट बिकम 5. 5 में 2 और मजीद ऐड करेंगे, इट बिकम 7. 7 में मजीद 2 ऐड करेंगे, इट बिकम 9. एंड 9 प्लस 2 इट्स 11. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द नंबर्स. लुक एट द पार्ट बी. In this pattern, they use only one stick. ठीक है, there is no counter. यहाँ इन्होंने कोई काउंटर यूज नहीं किया है. Look at the result of this. Counters and stick. In this pattern there is no counter, so we write here 0. ठीक है, यहाँ आप क्या लिखोगे 0 because there is no counter. And the sticks is 1. 1 stick यूज हुई है इस पैटर्न में. Look at the next. In this pattern they use 1 counter and the 2 sticks, 1 and 2. So we write here 1 and the counters are 1 and 2. Write the number of counters here. In the third one pattern here 2 and the sticks are 1, 2 and 3. Continue them for another 2 rows, means 1, 2. अब आप कितने काउंटर यूज करेंगे? 3 counters. Draw the pattern 1, 2 and 3. Draw the sticks 1, 2, 3 and 4 and the sticks are 4. Write here 3 and the counters are 4. Okay, now you use 4 counters for making another pattern. 1, 2, 3 and 4. Make sticks 1, 2, 3, 4 and 5. Write 4 counters and 5 sticks. Look at here 0, 1, 2, 3, 4. There is a counting and there is also counting 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, you have to complete part C and D yourself. First you complete
this work in your copy and then complete your homework part C and D. Now look at try this. In try this, write the missing numbers. Look at part A. Try this. Of page number 23. Question number 1. Write the missing numbers. Students, you know missing number? Missing number, the number which is hidden in an sequence. Part A. 9,445, 9,450. The next number is missing. Nine thousand 465, complete this sequence. This is 9,445 and this is 9,450. 45 and then 50 means addition of 5. Next number में आप देख रहे हैं कि 5 add हुए हैं, means the next number is 9,455. 50 plus 5, it's 55. 9,460. The next number is 9,465. After this 470. Okay, now look at part B. In part B, 3,592. The next number is missing. $6,592. 8,592 and 9,592. Look at the sequence. In this sequence, 3,592. Next two numbers are missing. Then 6,592. We can see that 592 is same. Changing is in 1000 position. 1000 position में changing है. Means it is 3,592. Next one is 4,592. 5,592. It is 6,592. The next one is 7,592 and this is 8,592. 9,592. 1000 add हुए हैं next number में. You have to solve part C, D yourself. Now look at question number 2. Write the function or rule for this machine. You know function. The number which is written in the function machine is called the function. आप देख सकते हैं कि इस मशीन का फंक्शन मिसिंग है. ठीक है, रिजल्ट आपको गिवन है. टेबल आपके पास है 6 1 6 12 18 24 एंड 30. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मशीन? आपको फंक्शन बताना है इस मशीन का. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Look at part A. You have a machine. In and out.
देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, यहाँ पे फंक्शन मिसिंग है एंड द रिजल्ट इज दिस. One, two, three, four. And the next one is 5. ठीक है. 6 1 is 6, 12, 18 and 30. Look at this result carefully. This is 6 1 is 6. It's the table of 6. 6 1 is 6. 6 2 is 12. 6 3 is 18. 6 4 is 24 and 6 5 is 30. Means when 1 is going to the machine, multiply by 6. ठीक है. The function of this machine is multiply by 6. So the answer is that. The function या फिर रूल, फंक्शन भी कह सकते हैं और रूल भी. द फंक्शन और रूल ऑफ दिस मशीन इज मल्टीप्लाई बाय 6. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द डायरी रिलेटेड टू दिस लेसन. Do question number 1 part C and D. On page number is 22 and try this question number 1 part C and D, page number 23. You have to solve this homework. Now we move towards our next unit. Unit number 7. Unit number 7 is based on the geometry. What is the geometry? Unit number 7 and unit number 8, both units are depend on the geometry. What is the geometry? Geometry is the branch of mathematics in which is concerned with the properties of solid surfaces, points, lines and angles. Okay, means mathematics की ऐसी branch जिसमें आप लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में और सॉलिड सरफेस, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्री कहलाती है. यूनिट नंबर 7 इज लाइंस एंड एंगल. इन दिस यूनिट वी स्टडी अबाउट लाइंस एंड एंगल्स. आवर फर्स्ट लेसन इज लाइंस. सो लुक एट द बोर्ड. यूनिट नंबर 7, लाइंस एंड एंगल्स, and the lesson number is 1, which is lines. What is the line? What is the line? Collection of points is called the lines. Means collections of points की collection आपके पास क्या कहलाती है? Lines कहलाती है. What is the point? Point is the location in the geometry. Geometry में point क्या होता है? Location को show करता है. Means you have so many points like this and it is represented by a dot. Points को किस तरह show करते हैं आप? Dot की help से. You have so many points. When you join these points, you draw a line. ठीक है? आप अगर इन points को join करते हैं तो आपके पास एक line form होती है. This is the collection of a point. Line is the collection of a point. अब ये line straight भी हो सकती है, like this is the straight line, but this point may collect in the curve way. Means इस तरह से भी ये join हो सकते हैं. This is also a line. This is a curved line. कौन सी line है ये? Curved line. This is a straight line and this is curved line. There are so many types of lines. First, the definition of line. Look at the definition of lines. Lines is the collection of a point.
collection of points that extends infinitely in two directions. ठीक है, collection of points is called a line and that extends infinitely in two directions. Infinite means लामहदूद, आप उसको जितना भी चाहे उसको बढ़ा सकते हैं. extend का मतलब होता है increase, like this, आप इसको जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं. इनफाइनाइट इस डायरेक्शन से भी एंड दिस डायरेक्शन. सो दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शंस. मींस आप इसको जितना चाहे ऊपर तक ले जाए, नीचे तक, एज योर इनफाइनाइट एक्सटेंड तक ये क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइन. फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइंस एंड द परपेंडिकुलर लाइंस. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. You can see here, this is a straight line. This is a curved line, like this. This is a curved line. This is also a curved line. This is a straight line. Horizontal line. What is horizontal line? Horizontal lines are the sleeping lines, like this. This is a horizontal line because it is in sleeping mood. Sleeping line is called the horizontal line. And what are vertical lines? Vertical lines are the standing lines, like this. This is a vertical line. This is in standing position. So this is called vertical line. And this is horizontal line. This is straight, curve, horizontal and vertical lines. Our lesson is dependent on parallel lines and perpendicular. इस lesson में आप parallel lines और perpendicular lines के बारे में study करेंगे. What are parallels and what are perpendicular lines? Look at here. The lines which can never be meet, which do not meet, which do not intersect are called the parallel lines. ऐसी लाइन जो एक दूसरे को मीट नहीं करती, जो एक दूसरे को टच नहीं करती, these lines are called the parallel lines, like this. Look at these two lines. These two lines are parallel to each other. Means you have to extend this line. आप इस लाइन कितना ही दूर तक ले जाएं, कितने ही फासले पर ले जाएं, बट दे डू नॉट मीट ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पर. दिस इज अ पैरेलल लाइंस, लाइक दिस. दीज लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज आप इनको कितना ही एक्सटेंड कर लें, इनके डायरेक्शंस को कितना ही आप इंक्रीज कर लें, एक्सटेंड कर लें इनके साइज को, बट दे कैन नेवर बी मीट. ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगी. द लाइंस विच डू नॉट मीट, विच can never be meet, are called the parallel lines. So the definition of parallel line is that the lines which do not meet meet are called the parallel lines. Okay, for example, look at the square. The opposite sides of the square are parallel to each other, means look at this line and this line. These two lines are parallel to each other, means ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे से बाइसेक्ट नहीं करेंगी. These two lines are also in parallel to each other. This line and this line are also parallel to each other because ये lines भी कभी एक दूसरे को meet नहीं करेंगी. Look at your board. The upper border and the lower border are parallel to each other. ठीक है, this is a rectangle shape. इनकी भी जो borders हैं आपस में क्या है, parallel हैं एक दूसरे के. Now what are perpendicular lines? Perpendicular lines कौन सी होती हैं? The lines which meet at a right angle. ऐसी line जो right angle पर meet करती हैं
एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, these line are called the perpendicular lines like this. Horizontal and this vertical line are cross each other at a right angle. What is the right angle? The angle which is equal to 90 degree is called the right angle. ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है. What is the angle? We discuss about the angle in our next lesson. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है. So the lines which cross each other at a right angle are called the perpendicular lines. Look at the square. This line and this line. Look at this vertical and this horizontal line are meet of this point. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर. So this is the right angle. राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? मीट. So these two lines are perpendicular to each other. This line and this line are also perpendicular because they meet on a right angle. ठीक है, they meet on a right angle. So these two lines are also perpendicular lines. Look at this line and this line. These two lines are perpendicular to each other, and this line and this line are also perpendicular to each other. Look at your board. The corners of your boards are the perpendicular to each other. So the definition of perpendicular lines is that the lines which cross each other at a right angle are called a perpendicular line. Perpendicular, C-U-L-A-R, perpendicular lines. You have to memorize the spelling of parallel and perpendicular lines. Okay. P-E-R-P-E-N, perpendi, D-I, perpendicular, C-U-L-A-R, perpendicular lines. The lines which cross each other at right angle. Right angle means 90 degree का angle. Right angle 90 degree angle. Are called the perpendicular lines. Okay students, you have to complete these definition in your copy. First you make the title page of unit number 7, lines and angles, and the lesson number 1 is lines, and then complete this definition, lines, parallel lines and the perpendicular lines. Now come to the exercise. Look at question number 2. We start our exercises from question number 2. In question number 2, which of these are vertical or perpendicular to the ground? Look at these pictures. ठीक है, you have some pictures. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पिक्चर वर्टिकल है और कौन सी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर, you know that the lines which cross each other at a right angle. ऐसी लाइन जो एक दूसरे को राइट एंगल पर मीट करती हैं वो कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर. एंड द वर्टिकल्स आर लाइन स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइंस आर कॉल्ड द वर्टिकल लाइंस. Look at question number 2. On page number 63. Which of these are vertical or perpendicular to the ground? Ground को भी आपने as a line consider करना है. Okay. Part A. Look at this shape. Look at this picture. This is a pole. ठीक है. And this is the ground. So we consider the ground as a line. ठीक है, एक लाइन ये है and the second one line is that. ये एक और लाइन है. These two lines are meet each other. ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं at a right angle. You can see here they make a right angle. So this is perpendicular. आप क्या लिखोगे यहाँ पर? Perpendicular. Look at part B. Look at another shape. Look at this. This is a line. इसको भी आप एक ground को भी आप एक line consider करेंगे. And this shape is also a line. आप इसको भी एक line consider करें like this. This line
मीट ईच अदर, ठीक है, मीट तो कर रही है लेकिन ये राइट एंगल पर मीट नहीं कर रही, सो दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर लाइंस, सो वी राइट हियर नॉट परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज नॉट वर्टिकल, वर्टिकल भी ये नहीं है बिकॉज वर्टिकल लाइंस आर द स्टैंडिंग लाइन, ये वर्टिकल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नॉट अ परपेंडिकुलर। Look at part C. You have a flower. Look at this flower. This flower is also a line. ठीक है, अब इसको कंसिडर करेंगे एज अ लाइन और दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, यू कैन सी हियर they meet at a right angle, okay, they meet at a right angle means two lines which cross each other at a right angle, so this is a perpendicular. Look at D, part D. In this part there is no ground level, ठीक है, you have only a shape like this, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक शेप है, देयर इज नो ग्राउंड फ्लोर मींस यहाँ पर एक ग्राउंड का लेवल आपको नहीं दिया है, एक ही लाइन आपको कंसीडर करनी है एंड दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन, ओके, दिस इज द स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, सो दिस इज द राइट हेयर वर्टिकल, ठीक है, ये कौन सी शेप हो गई, वर्टिकल। यू हैव टू सॉल्व पार्ट E योरसेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दिस शेप, यू हैव 3 शेप्स, लुक एट, ठीक है, and complete each of these statement using the words perpendicular or parallel, ठीक है, आपको जो A B C D X Y जो भी आपको parts given है उसको आपने parallel और perpendicular से fill करना है। Look at question number 3, you have to solve part E yourself। Look at question number 3 on page number 63, you have different shapes like this, they meet at a right angle, A पॉइंट्स दिए हुए A, B, C and D, this is a triangular shape, E, F and G, look at part A, AB, this is stand for AB line, ठीक है, AB line, AB जो कंबाइन करके लिखा हुआ है it stand for AB line, AB is dash to CD, part B is EF is dash to EG, part C HI is dash to HJ and part D is AB is dash to BD, BD स्टैंड फॉर लाइन, ओके, लाइन के लिए यहाँ पर सिंबल यूज हुए हैं कैपिटल लेटर में। You have to look at the shapes carefully. AB is dash to CD. Look at the line AB. This is AB and this is CD. These two lines are parallel or perpendicular to each other?
These two lines are parallel to each other. So we write here parallel. Now look at part B. EF is dashed to EG. Look at EF. This is EF, line EF, and this is EG. These two lines are cross each other at this point at a right angle. So this line is perpendicular line. So we write here perpendicular. Look at part C. HI is dashed to HJ. Look at this line HI, and this is HJ. These two lines are also perpendicular to each other because they cross at a right angle. Okay, so these lines are also perpendicular. Look at part D. AB is dashed to BD. This is AB. Look at this. This is AB. And this is BD. AB line and BD line are crossed at a right angle. So these two lines are also perpendicular. So right here perpendicular. You have to solve part EF yourself. First complete this work in your copy and practice, and then complete your homework. Like this. Which of these capital letter has 2 pairs of parallel lines and 3 pairs of perpendicular lines? Means आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर capital letter है आपके पास. You have to look at these letter carefully and look at which capital letter has 2 pairs of parallel lines. कौन से capital letter के 2 pair हैं parallel lines के और 3 perpendicular pairs हैं उसमें. Look at the capital letter. Try this on page number 63. Look at the capital letter. First is E, F, H, I, and then the last is L. ठीक है, आपको इन कैपिटल लेटर को केयरफुली देखना है और बताना है कि कौन सा कैपिटल लेटर है जिसके अंदर 2 पेयर है पैरेलल लाइंस के और 3 पेयर्स हैं किसके, परपेंडिकुलर लाइंस के. लुक एट F, कैपिटल लेटर F को देखिए. इट हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन 1. ठीक है, इसके अंदर एक ही पेयर है पैरेलल लाइन का और परपेंडिकुलर लाइन इसमें कितनी है, 1 and 2. देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइन. सो ये लेटर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक ही पेयर है पैरेलल लाइन का और 2 पेयर है परपेंडिकुलर लाइन के. लुक एट द कैपिटल लेटर E. इन दिस कैपिटल लेटर इट हैज, दिस इज 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन. ठीक है, ये तो एक पैरेलल लाइन होगी, दिस एंड दिस. नाउ लुक एट दिस एंड दिस. दिस इज आल्सो पैरेलल लाइन. सो कैपिटल लेटर E हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन तो है इसके पास 2. अब इसमें चेक करते हैं कि क्या इसमें 3 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है. लुक एट दिस, इट मेक द एंगल ऑफ राइट एंगल. लुक एट दिस line is also make the right angle and this line is also make a right angle of this line. ठीक है, so it has also the 3 pairs of perpendicular line. तो वो कैपिटल लेटर कौन सा है जिसके अंदर 2 पेयर है पैरेलल लाइन के और 3 पेयर्स है परपेंडिकुलर लाइन? दिस इज कैपिटल लेटर E. So the answer is that the capital letter E, inverted commas में लिखिएगा. The capital letter E has 2 pairs of parallel lines and 3 pairs of perpendicular lines. Okay, so this is the answer of try this. Now look,
Now the lesson is completed. Look at your diary. Do complete all work from page number 90, 20, 22 and 24. Page number 19, 20, 22 and 24. And you have to do question number 2 part E and question number 3 part E and F from page number 63. Okay students? Okay, I hope you have got it. But if you have any doubts, so you keep watch this video again and again. We will start our next lesson in next video, and you must complete your all work. Okay, thank you. Allah Hafiz.